हाँ जी। तो क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था बिल्कुल भी कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो बनाने का, तो आज हम लेके आए हैं नया कॉन्सेप्ट। उस नए कॉन्सेप्ट का नाम है कोडिंग मीम रिव्यूज। एकदम ताजे ताजे मीम आज हम रिव्यू करने वाले हैं कोडिंग के बारे में, है ना। और दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू एनीवेज। तो जी हाँ, आज हम करेंगे कोडिंग मीम रिव्यूज एंड आओ चलो चलते हैं फिर से क्या पहली बार ही है भाई। ठीक है, और दूसरी बात ये, एज यू कैन सी, अगर तुम लोगों को मेरे को रेडिट पे फॉलो करना है तो मैंने अपना नया आईडी बनाया है, क्योंकि मेरा पर्सनल आईडी पहले ही सस्पेंड हो चुका है। शाउट आउट टू ऑल द सस एक्टिविटीज। खैर, तो मैंने नया आईडी बनाया है, फॉलो दैट ऑन रेडिट। और बाकी चलो, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स गेट टू द पॉइंट। डोंट लीव योर पासवर्ड विजिबल टू एवरीवन, राइट? एंड देन ही पुट्स इट अंडरस्कोर। um काइंड ऑफ एवरेज मीम। देखो, अब है मीम रिव्यू, है ना। मीम रिव्यू यानी रेट करेंगे क्यों? क्योंकि भाई प्रोग्रामर है अपन लोग, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज मीम या फिर डाउन टाइप मीम के लिए ये, एवरेज मीम के लिए ये, और बहुत अच्छे मीम के लिए ग्रैंड सैल्यूट। ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू विद मी। तो आओ अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट मीम पे चलते हैं। डिड यू जस्ट कॉपी दैट कोड? यस ऑफ कोर्स। डिडंट यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट इन योर क्लिपबोर्ड? इट्स एवरेज मीम। जिनको समझ आया होगा उन्हें समझ आया होगा, जिन्हें नहीं समझ आया होगा तो फिर देखो, जैसे कि यार एक्चुअली ये इट्स नॉट इवन रिलेटेड टू कोड, टू बी ऑनेस्ट। जैसे तुम्हें कई बार होता है ना कि तुमने कोई चीज पहले इंपॉर्टेंट कॉपी कर ली, लेकिन तुमने उसे कहीं पे पेस्ट नहीं किया। उसके बाद फिर तुमने कोई दूसरी चीज कॉपी करी और फिर उसे पेस्ट कर दिया, तो फिर तुम्हें बाद में याद आता है होली क्रैप, है ना, दैट मोमेंट। खैर एनीवेज यार, मीम्स। आहा, आहा, first they give us cloud, now they'll give us water. Drinking water, AWS water supply. Shout out to Jeff Bezos. Great meme. Ah, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में भी मैं भाई, I just dislike software testing memes as much as I dislike software testers. Anyways, now. Allow Docker push to push multiple. Okay, sorry I missed your comment of many months ago. I no longer build software and make furniture out of wood. The hours are long, the taste sucks, and there's always the opportunity to remove my finger with a table. But nobody asks me if I can add RSS feed to FTP. Great meme, like great meme. Accidentally modifying a deep nested header file. Now you have to rebuild 361 files. Ouch. Has happened and it happens a lot of times, और ये सिर्फ सीलैंग में ही नहीं, like बहुत जगह पे होता है. Once you are on GitHub trending, ये चाहिए भाई बस. That is what we want. That is what we fucking want. GitHub नहीं तो यार YouTube पे ट्रेंड करा दो। अगर ये वीडियो देख रहे हो, लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। रोड मैप टू मास्टर डेवऑप्स। भाई ये तो अच्छा है यार, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली गुड, दिस इज नॉट अ मीम भाई। ये एक्चुअली अगर तुम लोगों को इंटरेस्ट रहेगा ना तो मैं शेयर कर दूंगा, तो मैं इसे पहले सेव कर देता हूँ एक बार, है ना। हाउ इट फील्स टू बी अ क्रिप्टो माइनर इन 2024। Chop with salad and earn for 80 to $200 per month with an RTX 3060 or better। यार एक्चुअली में एक तो ना, जिन लोगों को नहीं समझ आया तो क्रिप्टो यानी यार बिटकॉइन वगैरह तो जानते ही हो ना। तो बिटकॉइन का एक तो पहला तरीका ये होता है कि यू जस्ट पहला तो यू जस्ट ट्रेड इट,
दूसरा यू माइन इट। अब माइन करने में ये होता है कि यू नीड अ वेरी वेरी हाई कंप्यूटेशन पावर, तो ऑब्वियसली भाई उसमें किडनियां बिक जाती हैं। खैर, how long have you been programming? 4 years. So you have lots of knowledge in this field. Average mean, but very relatable. What is the biggest lie you have heard from a programmer? It should work now. Bhai, it's Paul Graham. It's Paul Graham, bhai. अपने आप ही. It's not a great name to be fair, but like obviously भाई Paul Graham है. जिन लोगों को नहीं पता, Paul Graham is the founder actually of Y Combinator, जो कि एक बहुत ही बड़ी स्टार्टअप फंडिंग फर्म है. Java inventor. Java was originally developed by Ryan Gosling. What the hell? Why? Now, I like Visual Studio Code more than Visual Studio because it is lightweight, boots up fast, and it is not complicated to use. Oh, bhai, I swear, this is actual real shit. This is actually relatable. And जिन लोगों को फर्क नहीं पता, Visual Studio is very different from Visual Studio Code. विजुअल स्टूडियो कोड इज जस्ट तुम्हारा आईडी आता है, ठीक है, लाइक एक टेक्स्ट एडिटर आता है, और उसमें फिर तुम बाकी चीजें करते हो. एंड जो तुम्हारा वैसा आईडी होता है जो कि विजुअल स्टूडियो कोड है, जिसमें लाइक यू गेट ऑल द एंटरप्राइज स्टफ, दैट इज वेरी 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 फकिंग हैवी, है ना. खैर, पब्लिक डबल गेट कम एवीजी. यार अच्छे मीम्स नहीं मिल रहे यार. If anyone's wondering, yes, Rust is mentioned in an official paper from the White House. Rewrite the world in Rust. What do you mean the did I start? Nice one. Nice meme. It's like average and nice के बीच में. What is this? This is nice, right? This is actually nice. That's actually very good. जिनको नहीं समझ आया, he stored that different file extensions with the same name. Choose the most cursed one. है ना? And यहाँ पे अगर तुम देखो तो what the actual fuck is this? है ना? खैर, यार थोड़े से अच्छे न्यूज़ चाहिए भाई. Testing team ready with a new PO bug for me. Me trying to develop a new feature. हम्म क्या करे यार अब. एक तो यार आई एम नॉट एबल टू फाइंड गुड मीम्स. I swear भाई, this is the story of every fucking API, every fucking framework भाई. मतलब you know, जब तुम किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को देखोगे, चाहे फ्लास्क हो गया, है ना, चाहे तुम्हारा रिएक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब कुछ भी खोल दो ना भाई, दिस इज वेरी फकिंग एक्यूरेट भाई. पहले इट्स ऑल फ्लावर्स एंड बनीज, उसके बाद इट जस्ट गोज हेवायर भाई, दिमाग खराब हो जाता है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग ट्यूटोरियल्स, क्योंकि भाई हर कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकता होता ना, तो ट्यूटोरियल्स की जरूरत ही ना होती. हम्म माय नेम इज जेसन. Say Jarvis and he's confusing you to through the that was a nice one. Hard to swallow pills. Scrum Masters are bloatware. I do not even know what Scrum Masters is. I'm sorry. Hmm. No, you can't use generic objects and see it can't do that. Define. Oh, what the hell?
होली क्रैप! ये मैं समझाने भी नहीं वाला। जिसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पता है उसे अपने आप पता लग जाएगा। When E2E test finds a problem before it takes down the site, all because of a playwright script you wrote in 2020. Next, can you know this man, Nicola William Defoe? The Last Temptation of Christ? I do not know. I definitely do not know. New fast exponential algorithm just dropped. Define? What the fuck is this? Is that fast? I can't see the code with clarity. I don't know. Bzowski. I do not know again, bro. When your unit tests work, but the integration tests that call the exact same function. I swear, bhai, it is the problem of every fucking code. मतलब इतना ज्यादा भाई, it's just irritating at one point कि मतलब I don't even know what to say, but it just happens every time. So great me. Microsoft announced they were breached by a soul. Wait, did that happen for real? भाई what the hell? ये तो चलो देख लिया, ये भी देख लिया. Half of them are repeated, yeah, actually. The programmers have been replaced by AI and are now seeking alternative roles such as waiter. Your lemon juice, sir, it's just water. The lemon is coming shortly. Please free to start drinking. Great me, boy. This is actually good one. ये वो मीम है जो कि जिन्होंने जरा सी भी प्रोग्रामिंग करी है तो उन्हें समझ आ जाएगा, है ना? I used instead of bro. This is exactly me. Great meme for being relatable. जिन्हें नहीं समझ आया, इट्स ऑन कमांड प्रॉम्प्ट में जब भी तुम करोगे तो तुम्हारे पिछले वाले कमांड्स लोड होते हैं ना, तो दिस इज एग्जैक्टली दैट. Hmm. Nah, son, one day you'll be a man, dad. But you still can't spell it. Nice me, boy. Nice me. Very nice me. Here, hmm, most memes are just average. ठीक है, प्रोग्रामर्स का वैसे ही कोई ह्यूमर नहीं होता, तो ऑल दीज मीम्स इज मैं. तो देखते हैं अगली बार अगले कोडिंग मीम रिव्यू में अगले कोडिंग मीम रिव्यू में मिलते हैं. ठीक है. आई हैड टू प्रिंट इट लाइन बाय लाइन. बट हाँ, अगले कोडिंग मीम रिव्यू में मिलते हैं. तब तक के लिए गुड बाय.